आपने नोट किया होगा कि मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसको मैं फिर बाद में देख लेता हूँ, कभी-कभी उसमें एक जगह पे आप कोई गलती हो जाती है ना, तो मैंने नोट किया था कि वो एक जगह पे थोड़ी सी देर के लिए मैंने कंट्रोल मास के बारे में जो चीज़ बताई थी वो बिल्कुल ऑपोजिट थी जो ओरिजिनली मैंने बताई थी ना, तो आप वो एक फाइल में मेंटेन करूंगा एरेटा के नाम से। सो कीप एक्चुअली व्यूइंग दैट फाइल फॉर एनी सच प्रॉब्लम्स, क्योंकि बाद में वो एडिट करना वीडियो का इतना आसान नहीं होता। ठीक है, so let's get to this problem of molar bases again. We started this last time, but we did not have enough time to explain these different units. Although you have some idea of mole आपने नाम सुना होगा, और आपने एक और नाम सुना होगा एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट। ये याद आ रही है आपको? ये जो दो नाम मैंने बताए हैं अभी, एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। हम्म और मोर प्रिसाइजली एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ये आप बताएं कि आपको याद आ रही है कि नहीं? कैन यू रिकॉल दैट? Okay, so what we mean by that is, so I'll just highlight this, uh, molecular mass, yeah, or atomic mass. Um, and if you want to look for a unit of that, you must have heard before this name, atomic mass unit. ठीक है, AMU लिखते थे पहले ना, उसमें issues थे. I don't want to get into that history, but for some reason scientists decided to call it unified atomic mass. For there were obvious reasons. It was not just a change of name, but a change of how you define it. And they started writing U rather than AMU. Okay? But even this was with some problems. And I think later there was a new name, of course, with some more changes. And that is called 1 Dalton, okay? DA. So now you replace all these units with 1 Dalton, and Dalton is defined in this way. If you take one single atom of carbon, naturally occurring carbon, and if you take the mass of it, okay, because of this 12, you define that in such a way that 1/12 of that is defined as 1 Dalton. So based on this rule, what will be the atomic mass of carbon? If I want to write that, it will be mass equals mass of atomic mass of carbon 12 in terms of this unit. Will it be 1 dA or it will be how many dAs? 12 dAs, yeah? This is how you define it. If 1 Dalton is 1/12 of it, one atom should have a mass of 12 dA. This is how you define the unit of atomic mass and molecular mass. In this course, we will be dealing with gases, so it makes more sense to speak of molecular mass. But that is not very practical, okay? Then people define 1 mole, of course, in different versions, but the modern version is that if you take any substance, elements or compounds, how do you define 1 mole? You say that it is constituted by a fixed number of entities, microscopic entities. Now, these entities will either be atoms or molecules or ions, depending on what you are talking about. So you know what entities mean in a particular context, but this number is very important, okay? This number is very important. Can you tell me the name of this number? You must have seen this before. Avogadro's number, okay? You call it number because number has no units. And it is used as a unit of what we call the amount of substance. So when we say mass of substance and amount of substance, whenever you see small n, it will mean amount of substance in this course. And that will be
measured or counted in moles. So you think of mole like a dozen, okay? But one thing is interesting, it's because one mole corresponds to this huge number, this large number, entities or particles. We would like to attach some unit with this number so that this mole gets cancelled out. So that's how we define Avogadro constant. And this is different from Avogadro number. The value is the same, but you define it in such a way that it is mole inverse or per mole. The advantage of this per mole is that it will cancel out in some calculations. Okay. So when you say Avogadro constant, make sure that you write this unit. Okay. So now, but you must be wondering now. Now, this is the reason why I don't think there is anything new so far today. Maybe this was some of refreshers, but you must be wondering where this number actually came from. Why this particular number and not any other number? Okay, can anyone recall that? Or not? Why this particular number? So the idea is this, historically. That's why I wrote this approximately equal to, because historically this was equal. But the way things were defined later on makes that as an approximation. But the concept is still useful to know the reason why we came up with this strange number. The idea is this: if you take one molecule, yeah, or one atom, but in this course we are interested in molecules. So if you normally you will speak of the mass of that, but we are not interested in other units. We are just interested in Daltons, that unit, okay? Because we know Dalton is a useful unit. So if you count the number of Daltons of a molecule, for example, what will this be for carbon? Tell me. This thing which I am now writing, this will be 12. 12 what? 12? What should I write here? 12. No, you see, you typically are tempted to say 12 Da, but I did not ask for the mass of carbon molecule. If I say mass has the unit of Dalton or kilogram, in this case Dalton. My question is different. What have I asked? I have asked Daltons. So that Daltons is in the language there. So this is just 12, okay? If I ask you how many kilograms, you will not write kilogram again, okay? Is that clear? Yes. Because this is a pure number now. So the idea is that if you take these Daltons of any molecule, of course, not all molecules have the same number of Daltons. So if you take that Dalton for a particular molecule, you will get this number. And that number should equal, now this is the idea behind this number. That number should be the number of grams of mass. Again, this will be a pure number in 1 mole. So 1 mole of a substance should be such that if you measure the mass and you convert it into grams and then you look at just that number without the unit, this number should equal this number. ये concept clear हो गया? ये वाला? No sir, एक atomic unit का mass और एक 1 gram का mass किस तरह equal हो सकता है? नहीं, लेकिन ये 1 gram का mass नहीं है ना, ये 1 mole का है ना. आपने इतने नंबर लेने हैं. It's a huge number. आप कार्बन, यहाँ पे आप कार्बन का 1 atom ले रहे हैं, ठीक है? If I want to explain it graphically, I just take 1 carbon atom, I measure the mass of it, yeah? Then I check the units and I express it in grams, yeah? No, not in grams, sorry. I express it in Daltons, and then I look at the number, and that number for carbon is 12. For oxygen, it will be something else. For hydrogen, it will be something else. But I will get some number, okay? Here I start with 1 mole, a huge number, yeah? And this number should be such that
if I calculate the mass of that large number of molecules of the same substance, of course, I'm not talking about another substance, and then I look at that in grams, and then I just look at the number without the grams, that number should equal this number. So for example, if I want to write this result for carbon, what should I get on the left hand side? Well, tell me. On the left hand side, I will get what? 12, yeah? Because this 12 is the number of what? Daltons in one carbon atom. Got it? On the right, I should get the same 12, but this will have a different meaning. This will be the number of what? Number of grams. And how many carbon atoms? This number. Now this is a huge number, okay? And that is exactly what we mean by 1 mole. That's why I wrote 1 mole here, okay? So when I write 1 mole, it is not 1 atom, it is 1 mole of atoms or 1 mole of molecules. That's a huge number. अब समझ आ गई बात? बताएं? या भी confusion है इसमें? Think about it, then we are talking about different things, okay? Here we are talking about 1 molecule, here we are talking about this number of molecules. Of course, इनका mass same नहीं हो सकता Daltons में. ये ऐसा ही है ना कि आप डॉलर और रुपये को जब कन्वर्ट करते हैं तो 1 rupee cannot be equal to $1, ठीक है? So, but here, interestingly, what if I don't want to use grams? What if I want to use kilograms? So I cannot go with 1 mole. I will have to go with 1000 moles, and that I call that one what? 1 kilomole. That is obvious. Now this is kind of strange. Sometimes we don't want to work with grams, we don't want to work with kilograms, we want to work with pounds. So if I want to come up with another unit related to mole, and I just call it pound mole, yeah, just like K mole and 1 mole, 1 pound mole should correspond to such a number which will not be equal to this, in such a way that I get this equality for pounds and not for grams or kilograms. So अब मेरे पास 3 units आ गए. एक मेरे पास क्या आ गया? Mole. The unit which you are already used to, it corresponds directly to this number. Another is kilomole, that corresponds to 1000 times that, and then pound mole, that corresponds to some other number. Now if I ask you, let me just show you something. Although last time I did not write it down, but you can expect that kilogram and pounds are related, okay? किसी को याद आ रहा है कि 1 pound और 1 kilogram में क्या relationship है? I think it starts with 0.4531. I don't know, something like that. I forgot all the other digits. ये आपने देखा है कहीं? नहीं भी देखा तो आप सर्च करें, आपको मिल जाएगा, ठीक है? Let's say हाँ? सर BME में पढ़ा था. अच्छा ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये बनता है कि I know 1 mole corresponds to this number, okay? But if I want to know कि 1 pound mole how is it related to 1 mole? So मैं कैसे जाऊंगा? How can I use this relationship? Remember, 1 pound mole corresponds to the number of pounds, yeah? So I start with this. I know that pounds, instead of changing this unit, I want to know that, but I will change pounds. So the number of pounds in kilograms will be what? Which unit is larger, pound or kilogram? If I know the number of pounds, let's say I have 5 pounds, okay? So this will be 5. So how should I change this 5 so that I get kilograms here? सर 0.45 से मल्टीप्लाई करेंगे. Yes, I'll multiply that, okay?
So that should give me kilograms, yeah. But for the direct definition of mole, I need grams, yeah. Agreed? Because Yes, sir. one kilomole corresponds to kilogram, we need moles, okay. So I need to multiply further by, 1000. and this should give me the number of pound moles. अब समझ आ गई बात? So this is how, because this 5 will be different each time, so basically this is the conversion factor. 1 pound mole equals this many moles. और ये नंबर क्या है? 453 moles roughly. वो पॉइंट्स आप भूल जाए. Got it? That's how you define 1 pound mole, okay? So keep these units in mind, okay? So now you should be in a better position to make sense of what we said last time. Molar mass of a substance. I'm not talking about molecular mass, okay? Molecular mass will be the mass of one atom or one molecule. Sorry, in this case it will be one molecule. But I'm talking about molar mass. So this will be the mass of 1 mole, yeah? So you can think of it as mass per unit amount, okay? Because you don't know whether this amount will be in moles. Although you call it molar mass, ye aap zehn mein rakhe. Although you call it molar mass, so but it's not necessary to be in moles. You can use any of these 3 units, okay? In all cases, you will call it molar mass, just to keep things simpler. You cannot have kilomolar mass or pound molar mass. You will always, that's why when we say molar basis, we can be free to choose any of these units. So molar mass is just the mass per unit amount, and that amount can be per mole, that can be kilomole, that can be pound mole. So if you understand this wording, let me just change this color because I'm not happy with this color. Yeah, now it should be okay. Now, can you get why we wrote this thing, m divided by n? Does this reflect this, what we say here? You know, mass, m is the mass, okay? And when you say per unit, you divide, and you divide by what? You divide by the amount, or amount के लिए हमारे पास क्या symbol है? N. So just simple, m over n, mass per unit amount, okay? Clear हो गया ये? अब इसका यूनिट क्या होगा वो डिपेंड करता है m और n की यूनिट्स पे. अगर मास आपका किलोग्राम्स में है और ये n आपका किलोमोल में है तो इट विल बी किलोग्राम पर किलोमोल. ठीक है. इसी तरह अगर ये आपका ग्राम में है, सिर्फ ग्राम में है, के नहीं है, और ये मोल में है तो इट विल बी ग्राम पर मोल. वो अलग बात है कि किलो चूंकि कैंसिल हो जाता है, सो इट्स द सेम थिंग. लेकिन इट विल बी डिफरेंट इन इंग्लिश यूनिट्स, ओके? इफ द मास इज इन पाउंड्स and if this amount is in pound mole, so you will have pound mole. Now do not try to cancel this pound and this pound, okay? Because this pound is not a multiplication, okay? This is just a name which corresponds to this pound. आपको 453 वाला फैक्टर ध्यान में याद रखना चाहिए, ठीक है? सॉरी, ये गड़बड़ हो जाती है कभी-कभी. Now one more thing, the accurate name, if you talk to serious chemistry guys, they will use molar mass and molecular mass. But historically, people have been using this name for molar mass, molecular weight. Now this has 2 problems. कोई बता सकता है इस वर्ड में 2 प्रॉब्लम्स है. एक क्या है कि मोलर की जगह क्या लिखा गया है? Of course ये गलत है, लेकिन बस लोग इसको यूज कर रहे हैं. Don't ask me. Particularly chemical engineers and mechanical engineers, they use this word. और दूसरी गलती क्या है कि मास की जगह वो क्या लिख रहा है? वेट लिख रहा है. ये दोनों चीजें गलत है, but in spite of this, even this book uses molecular weight. और आप जब इसकी यूनिट पढ़ेंगे आप परेशान हो जाएंगे कि यूनिट उसका क्या है, ग्राम पर मोल और किलोग्राम पर किलोमोल. अब ये किसी भी सूरत में उसका यूनिट नहीं है क्योंकि उसका यूनिट डाल्टन है, ठीक है? लेकिन just live with this. You can live with this. There are many things which we say wrong, okay? मैंने आपको already EMF का एक last time example दिया हुआ था ना. We use EMF for electromotive force and we know it is not a force, it is a voltage, but this is still in use. As long as you know what you are talking about, it's fine. इस slide में कोई problem है?
or we can move on? Of course, for practical calculation, if I don't give you all these digits, you can simply use these two or three digits, whatever you remember. Okay. Okay. Now the next concept. Remember, this whole series of topics started with, if you remember, we had extensive properties. Okay. Then we have intensive properties, and intensive properties we started with the specific volume. Small v, it is volume per unit mass, yeah, and you define it at a point, okay, and then when you divide this by the molecular mass, you get that specific volume on a molar basis. This is how we started it. So now we need similar definitions for pressure. So pressure is also an intensive quantity, okay, and it is normal force per unit area, okay. Of course, it's the magnitude of the normal force, because force is a vector, and you can't divide a vector by a scalar or another vector. Division is not defined for vectors. So you have to take the magnitude, it should be implicit. And because we need to define it at a point, it's not just force divided by area or the magnitude of normal force. This n is for normal. Normal is very important, क्योंकि अगर आप एरिया इस तरह है और फोर्स इस तरह है तो फिर ये गलत होगा, आपको इसका वो कंपोनेंट या एरिया का या फोर्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा. But still, that is not enough. This will not give you a definition for at a point. You need to take the limit, and you have to shrink the area. You have to shrink if this is the area you start, then you have to shrink the area to a level after which you have enough number of molecules so that you can ignore that statistical variations and you have a stable value. आपको last time याद होगा ना, मैंने statistical regularity की बात की थी कि you cannot come to an actual point, क्योंकि at an actual point this ratio will not be defined, but we will have to stop at a point where we have small enough to be approximated by a point and large enough for the statistical randomness to be stabilized. So that is what we mean by this A prime. आपको याद होगा last time हमने volume approaches V prime किया था. V prime का जो मतलब था वही यहाँ पे A prime का है. समझ आ गई बात ये? Is that clear? This limiting approach. This is just a way of defining this at a point, because that is how every intensive quantity must be. अब यहाँ पे एक चीज है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं, लेट्स से यू हैव अ सॉलिड, ओके, अब इस सॉलिड पे आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें, इसमें करें, तो आपके ख्याल में ये तीनों का और अगर आप फिर क्या करें कि ये रेशियो डिवाइड करें, ये एफ एन ओवर ए, विल यू गेट द सेम आंसर्स? बताएं. और आप लेट्स से आप ये लिमिट भी ले लें फिर, ठीक है. सॉलिड में क्या होगा, ये देखो ना, यहाँ पे नॉर्मल एरिया आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नॉर्मल एरिया नहीं है ना, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वो उसका ये कंपोनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, या इसका या इसको डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है. मतलब लेट्स से आई एम स्पीकिंग ऑफ दिस एरिया एंड द फोर्स इज दिस, सो मुझे इस फोर्स का ये कंपोनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा जो इसके नॉर्मल है. तो इसका मतलब ये है कि दिस रेशियो फॉर सॉलिड्स विल बी डिफरेंट, या डिपेंडिंग ऑन विच डायरेक्शन यू आर अप्लाइंग द फोर्स. ये बात समझ आ रही है? इसकी एक और रीजन भी है कि सॉलिड में दो टाइप, एंड दैट इज व्हाई वी डोंट यूज द वर्ड प्रेशर फॉर सॉलिड्स, वी यूज द वर्ड स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस. आपको बीएमई से याद है shear स्ट्रेस एंड, ये दोनों नाम याद आ रहे हैं आपको? यस सर. क्योंकि आपका फोर्स या उसको स्लाइस करेगा या उसको कंप्रेस या एक्सपेंड करेगा, तो वहां पे हम प्रेशर की बात नहीं करते.
यही मामला आपके पास फ्लूइड्स इन मोशन में होगा। क्यों? क्योंकि फ्लूइड जब मूव करता है पाइप में तो आपको क्या नजर आता है कि लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स आर एक्चुअली स्लाइडिंग पास्ट वन अनदर। ओके, यहाँ पे लेट्स से ये जो पाइप है, पाइप के साथ फ्लूइड की मोशन क्या है? स्लो है, और सेंटर में क्या है? फास्ट है, और यहाँ पे फिर स्लो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि फ्लूइड्स इन मोशन दे स्टिल कैन हैव स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, क्योंकि लिक्विड्स में आपको पता है कि आपको वो चीज नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ ए फ्लूइड इज एट रेस्ट? नाउ माय फोकस in this slides is on fluids at rest. अगर फ्लूइड रेस्ट में है, लेट्स से आपने यहाँ पे फ्लूइड रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है, और अब यहाँ पे अंदर कोई भी एरिया ले लें और ये आप डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई करें, ठीक है, और ये फोर्सेस आप नहीं अप्लाई कर रहे, ये फ्लूइड एक दूसरे के अप्लाई कर रहा है। मतलब आप फ्लूइड में ही एक स्मॉल एरिया लेते हैं और सराउंडिंग फ्लूइड का देखते हैं कि सराउंडिंग फ्लूइड्स इस बॉडी ऑफ इस एलिमेंट पे क्या क्या फोर्सेस लगा रहे हैं। तो इफ यू टेक दिस रेशो फॉर ए फ्लूइड एट रेस्ट और स्टैटिक फ्लूइड, फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये रेशो चेंज होगा डायरेक्शन के साथ या ओरिएंटेशन के साथ? यस और नो? बताएं। यस सर। आपने कभी ये ट्राई किया है? देखें ना वो फर्क क्यों आ रहा है आपको, बात अगर समझ आ रही है। आप किसी भी चीज को बेसिकली जब डिकम्पोज करते हैं, आप यू आर टॉकिंग अबाउट एन एरिया, ओके, so force will have a component normal to the area and it will have a component you can decompose any force into these components, yeah, yes or no? लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा है आपने ना कि आप किसी प्लेन में, तो अब नॉर्मल और पैरेलल, तो नॉर्मल विल करिस्पॉन्ड टू नॉर्मल स्ट्रेस, पैरेलल विल करिस्पॉन्ड टू शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस इस लिक्विड में पॉसिबल है। यहाँ पे तो शेयर हो ही नहीं रहा ना, डिफॉर्मेशन नहीं हो रही है ना यहाँ पे। शियर स्ट्रेस तो लिक्विड में पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, शेयर स्ट्रेस लिक्विड में पॉसिबल है इफ दे आर इन मोशन। मैं अब यही बता रहा था थोड़ी देर पहले, शेयर स्ट्रेस के बगैर फ्लूइड मोशन कर ही नहीं सकता ना। लेकिन सर शियर स्ट्रेस जो है हम स्पेसिफिकली सॉलिड्स के लिए नहीं कंस्ट्रेंट करते। नहीं, वो यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि सॉलिड और फ्लूइड्स इन मोशन। ये मैंने पाइप वाली एग्जांपल क्यों दिया आपको? पाइप में अगर शेयर स्ट्रेस ना हो तो लिक्विड मूव कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। वन लेयर ऑफ फ्लूइड मस्ट, देखो ना ये जो सेंट्रल लेयर ऑफ फ्लूइड है, दिस मस्ट बी फास्टर देन दिस वन मस्ट बी फास्टर देन दिस वन मस्ट बी फास्टर देन दिस। आपको याद है मैंने बीएमई में आपको इवन एक प्रोफाइल भी शेयर किया था ऐसे कि सेंटर में वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, याद आ रहा है आपको? और ये पाइप है आपका, तो ये शेयर की वजह से हो रहा है ना। फ्लूइड एट रेस्ट में शेयर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड एट रेस्ट में आपको नजर आ रहा है कि आप अंदर जिस जगह पे भी जाएं, वो चूंकि लिक्विड में सिर्फ नॉर्मल आप अप्लाई कर सकते हैं, सो ये सारे ओरिएंटेशंस में दिस रेशियो विल बी द सेम, एंड दैट इज व्हेन वी रिप्लेस द वर्ड स्ट्रेस विद प्रेशर। प्रेशर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेस which does not depend on orientation. अब आपको समझ आ गई बात? Yes sir, thank you. ये है ना, this ratio does not depend on the orientation of the area for fluids at rest, and the reason is force balance, क्योंकि liquid at rest में और fluid at rest में force balance must होता है, without force balance वो move करना शुरू हो जाता है। तो that is why pressure is scalar, okay? But stress is not scalar. Stress आपको पता है कि stress हर डायरेक्शन में डिफरेंट होता है। So if you take one vector, मैंने पहले भी बताया था उस कोर्स में, and you get another vector and these two vectors are different,
सो स्ट्रेस ने अगर मल्टीप्लाई करना है तो स्ट्रेस मस्ट बी अ मैट्रिक्स, ओके, क्योंकि यू टेक वन वेक्टर and then you convert it into another vector. So if this is force, for example, and this is area vector, okay, area को अगर आपने उसका normal vector डाल देना, area normal to the plane, so क्योंकि ये force और ये area different है, so stress must be a matrix, ठीक है. So basically, pressure is a special type of stress when there is only normal component and that component does not depend on the orientation. इसीलिए आपके पास fluid में जो pressure है वो हर direction में same होता है, और अगर ये same ना होता तो जितने भी आपको hydraulic applications है ना, ये hydraulic brakes की या ये जो आप apply करते हैं ना brake, और वो हर direction में same आता है. Pascal's law आपको याद है ना, Pascal law of pressure, remember that? उसमें वो pressure हर डायरेक्शन में वो सेम क्यों होता है? वो इसकी वजह से होता है क्योंकि pressure is by its very definition the same in all directions. So now for the fluids in motion, in this course we will sometimes speak of fluids in motion, but that motion will be so slow that the normal stress, the magnitude of normal stress will be numerically very close to pressure, and that's why in many applications we will not distinguish between normal stress, the magnitude of it, and pressure. We'll ignore shear stress for these applications, but of course it's not true in all applications. Now how do you measure pressure? तो आपने ये दोनों ये जो दो मैंने यहाँ पे शो किए हैं डिवाइसेस या मेजरमेंट सिस्टम्स, इनके नाम आपको याद आ रहे हैं? इस लेफ्ट साइड वाले को क्या कहते हैं और राइट साइड वाले को क्या कहते हैं? Do you remember that? इसको कहते हैं मैनोमीटर, ठीक है, एंड इसको कहते हैं बैरोमीटर. सुने ये दो नाम? अच्छा, इसमें फर्क क्या है मैं बताता हूं आपको. Let's say here we want to measure the pressure in this tank at each point, okay? So I want to measure the pressure at each point here. अच्छा, and this is a gas, okay? आपको गैस और लिक्विड में एक फर्क आपको याद होगा. गैस के प्रेशर और लिक्विड के प्रेशर में क्या फर्क है? कोई याद आ रहा है आपको? इन दोनों के प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है? लिक्विड का प्रेशर किस वजह से मेनली होता है? मेनली उसका सोर्स क्या है लिक्विड के प्रेशर का? मतलब मेरे पास टैंक में पानी है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है और इस पॉइंट पे प्रेशर कम है, ठीक है ना? तो ये क्यों है? वजह बताएं. हाइट की. हाँ, तो हाइट की वजह से क्यों है? क्योंकि इस लिक्विड का वेट होता है ना, इस लिक्विड का वेट यहां पे आता है और वो हर डायरेक्शन में उसका इंपैक्ट होता है फिर, ठीक है. गैस में ये फिनोमेना बहुत नॉर्मल स्केल में नहीं होता. फॉर एग्जांपल मैं इस टैंक को देखूं, ये अगर आप नॉर्मल घरों में जो टैंक आपने देखे होंगे, इसमें यहां और यहां के प्रेशर में बहुत कम डिफरेंस होगा. क्यों? हालांकि यहां भी तो हाइट है ना. तो यहां पे क्यों इनसिग्निफिकेंट होगा? बिकॉज देयर इज अनदर फैक्टर व्हिच डोमिनेट्स दिस वेट, और वो क्या है? The pressure of a gas on the walls of the container is because of the motion of particles. ठीक है, वो जो collisions है ना, वो उसकी वजह से होता है. याद आ गया आपको? यहां पे वेट की वजह से होता है. सो यहां पे वेट डोमिनेट्स और जो collisions है वो डोमिनेट नहीं करते. इसीलिए यहां पे लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा हो या कम हो, उसका वेट ही डिफाइड करता है. गैस में
टेम्परेचर और प्रेशर के साथ क्यों टेम्परेचर के साथ प्रेशर क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि हाई टेम्परेचर मींस मोर कोलिजन्स। कैन यू रिकॉल इट नाउ? तो अब अगर यहाँ और यहाँ पे टेम्परेचर सेम है तो कोलिजन सेम होगी, तो हाइट विल नॉट मैटर। द ओनली एक्सेप्शन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है पहाड़ के ऊपर चले जाएं वो कम होगा, जमीन पे आ जाएं, ठीक है ना, वापस तो यहाँ पे ज्यादा होगा। अब यहाँ पे ये जो एयर है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे उस स्केल में फर्क है। नॉर्मल हमारे जो कंटेनर्स बनाते हैं उसमें डिफरेंस नहीं होता। विल यू रिमेंबर दैट? Okay, so now let's say we want to measure the pressure at each point, or maybe at this point if you want to be precise, and you make this arrangement. Okay, this arrangement of a pipe which has liquid. Okay, तो अब अगर ये आपने कनेक्ट नहीं किया तो ये लिक्विड कहाँ पे होगा दोनों में? अगर मैं यहाँ पे कर दूं इसको, बता सकते हैं आप? ये लिक्विड जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, मरकरी या वाटर या कोई भी, ये कहाँ पे होगा? ये सर अगर कनेक्ट नहीं किया तो सेम लेवल पे होगा। सेम पे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, ठीक है। तो इसको ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुश करेगा, ये सेम करेगा, दोनों चूंकि डिफरेंस है, सो देयर इज नो रीजन व्हाई दीज लेवल्स शुड बी डिफरेंट। यहाँ पे चूंकि अब ये गैस इसमें आना शुरू हो जाएगा और उस साइड पे कोई एक्स्ट्रा गैस नहीं है, तो क्या होगा? दिस बॉडी ऑफ गैस विल अप्लाई प्रेशर ऑन दिस साइड, apply a force basically. That force will push the liquid downward, and because the liquid has to find a way, so an equivalent body of liquid will go upward, और ये जो difference है, this difference will inform you about the pressure. अब समझ आ गई बात? Now how do we calculate that? Can we relate this pressure now? Let's say this pressure is P, okay, at this point. The pressure is P. तो लेट्स से दिस एरिया इज यूनिफॉर्म। अब एरिया को ए ले लें, यूनिफॉर्म एरिया। तो ये फोर्स कितना होगा बताएं मुझे इस साइड पे, या बल्कि उसको भी छोड़ दें। मैं आई वांट टू टेक दिस एज माय सिस्टम, ठीक है। तो इस सिस्टम पे नीचे से कितना प्रेशर होगा, ये कितना फोर्स होगा, वो बता सकता है? रिमेंबर दिस इज माय सिस्टम, ओके, दिस इज माय फ्री बॉडी। What will be the force from downwards at point B? Force आपको पता है क्या होता है? Pressure multiplied by एरिया, ठीक है। And because this fluid is at rest, motion तो नहीं है ना, so this force must equal the force from the other side. Agreed? Balance of forces. मुझे बताओ ये force कितना होगा? सर प्रेशर एटीएम इनटू एरिया। नहीं, हम एक और चीज कर लेते हैं। लेट्स से हम, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है, मैं लिख तो लेता हूं, P ATM times the same area। अब ये फोर्स बैलेंस क्यों गलत है? क्योंकि इसमें हमने क्या चीज इग्नोर की? दिस बॉडी ऑफ लिक्विड हैज इट्स वेट व्हिच इज डाउनवर्ड, या वो किस साइड पे ऐड होगा बताएं? राइट साइड और लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। क्यों? देखो ना, इस बी पे ये फोर्स डाउनवर्ड है ना, और वो भी डाउनवर्ड है, ये दोनों ऐड होंगे ना, because they are both acting downward। और पॉइंट बी पे there is only one source of force, and that is pressure। ये सिर्फ प्रेशर की वजह से फोर्स होगा ना। so this force must balance both of these forces, the weight of the atmosphere, this is basically the weight of what, and this must be the weight of the liquid। इसने अपना वेट तो सपोर्ट नहीं करना, वो तो नीचे है। समझ आ गई बात? तो ये कितना होगा बताएं? ये वेट कितना होगा? It will be mass times
ग्रेविटी या, और मास कितना होगा, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम या, और वॉल्यूम कितना होगा बताएं, ए टाइम्स, कैन यू कनेक्ट इट नाउ, this is area, this is length, a times L will be the volume, volume times density times G, this is the equation. Okay, इसमें क्या कैंसिल हो सकता है अभी दोनों साइड्स पे, Area. area, so let's get rid of the area. इस इक्वेशन में क्या अननोन है, बाकी सारी चीजें नोन है, Pressure. प्रेशर ऑफ द गैस, क्योंकि ये तो लोगों ने बहुत पहले मेजर किया हुआ है, लिक्विड अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, so you must know the density, you must know this, you must measure this length, ग्रेविटी पता है, so this is how you calculate pressure. Okay, अब इस साइड पे क्या है, this is barometer, barometer is used for measuring atmospheric pressure. ठीक है, इसमें ये अननोन होता है, so ये हम क्या करते हैं, how do we measure, how do we find that. अब यहां पे मुझे ये बताएं कि लेट्स मेक दिस कैलकुलेशन हियर अगेन, इस पॉइंट पे मैं ये कैलकुलेशन कर देता हूं, यहां पे मैं एक, ठीक है, सिस्टम बना देता हूं, और इस पे यहां से फोर्सेस हैं और नीचे से फोर्स है. अब बताओ नीचे से फोर्स क्या होगा, ये वाला फोर्स कितना होगा, ये मैं लेफ्ट साइड पे लेकर आऊं, ठीक है, बताएं मुझे, ये इसका सोर्स क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वेट है, लेकिन वो वेट मतलब एटमॉस्फेरिक, क्योंकि देखो ना, इसका जो वेट है और इसका वेट और इसका वेट तो सेम है ना, तो वो नीचे एक्ट करेंगे ना, वो ऊपर तो नहीं करेंगे. ऊपर किस चीज का वेट है, ये फोर्स, इस फोर्स का सोर्स क्या है मुझे बताएं, ये पानी का वेट नहीं है, जिस तरह यहां पे इस फोर्स का वेट क्या था, इस पानी का वेट नहीं था, वो इस गैस का प्रेशर था. ठीक है, तो यहां पे भी डू नॉट कंफ्यूज दिस टू बी द सोर्स, ये आपका सोर्स है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर का वेट इसको प्रेस कर रहा है, और वो प्रेशर यहाँ पे यहाँ ट्रांसमिट होगा, और ये और ए बी चूंकि सेम लेवल पे हैं, सो जो प्रेशर ए पे है वही बी पे होगा. ठीक है, अब मुझे बताएं कि ये फोर्स क्या होगा, ये जो मैं नीचे से एरो ड्रॉ किया है, पी एटमॉस्फेयर टाइम्स जो इसका एरिया है. ठीक है, एग्रीड. और अब ऊपर से फोर्स कितना होगा, it will have two terms, yeah, one is this, yeah, the weight of this liquid, वो कितना होगा, density times area times L times gravity, and what will be added to this now. अब इसका क्या रोल है, इसका इस क्लोजर का, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे नहीं आ सकता अंदर, उसको ये सॉलिड सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सीधा लिक्विड को इंपैक्ट कर रहा है, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि वो सॉलिड का काम है उसको रोकना. ये समझ आ रही है बात. तो ये जो फोर्स है डाउनवर्ड, ये एंटायरली इट विल बी बिकॉज ऑफ द वेपर. ये जो वेपर यहाँ पे आपने किया है, बेसिकली ये जब आपने यहाँ पे नहीं रखा था, लेट्स से इसको अलग करें ना, ये पानी अलग है, और लेट्स से इसको आपने अलग किया, तो ये क्या होगा इधर इस इन्वर्टेड पाइप में, इट विल बी फिल्ड विद दी वेपर्स. जब आपने इसको एक किया तो दिस वाटर विल फोर्स द लिक्विड अपवर्ड, और ये यहां पे रुक जाएगा जहां पे बैलेंस आ गया. ठीक है,
तो अब मुझे ये बताएं कि इसके साथ मैं क्या ऐड करूं? PA, pressure of the gas in area. प्रेशर ऑफ द वेपर, ये। सो P वेपर्स टाइम, इसमें क्या कैंसिल होगा? एरिया से। अब यहां पे इस इक्वेशन में क्या अननोन है? हाउ मेनी अननोन्स आर देयर इन दिस P इक्वेशन? vapor, P वेपर, क्योंकि आपको नहीं पता ना ये कितना प्रेस हुआ है। देखो ना, यहाँ पे ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, आपने इसको कंप्रेस किया, आपको नहीं पता ये कितना कंप्रेस हुआ है। सो इट इज अननोन। दूसरा अननोन क्या है? ये वो वहां पे नोन था क्योंकि वो मैनोमीटर था, यहाँ पे बैरोमीटर है, यहाँ पे इसी के लिए मैं हमने मेजरमेंट सेट की है। तो दिस इज योर अननोन बेसिकली। अब इसको क्या आपके हाल में क्या होना चाहिए इसका हल? हम्म so closed system experiment करें और atmospheric pressure खुद सेट कर लें। नहीं, हमें ये पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है ना। ठीक है, कंपेयर्ड टू दिस वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये जो टर्म्स है, ये दोनों टर्म्स जो है ना, इवन इफ दिस इज अननोन, दिस टर्म इज मच लार्जर देन दिस। तो ये बेसिकली इसको आप इग्नोर कर सकते हैं प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। अब ये तीनों चीजें नॉन है, ठीक है। ये जान के इसने सेटअप ऐसा किया हुआ है कि ये टर्म जो है ना नेग्लिजिबल हो, ठीक है। सर तो why do we have the vapors there? हम लोग फिर उसको इग्नोर क्यों नहीं, ये मैकेनिज्म है ना, इसके बगैर ये काम ही नहीं करेगा ना। ये आप लिक्विड वो भी हटा दे तो फिर ये वर्किंग प्रिंसिपल इसका आप कैसे मेजर करेंगे फिर? राइट सर। ये है ना, ये मैकेनिज्म के लिए होता है ना कि आपको वो काम चलाने के लिए एक सेटअप चाहिए। लेकिन इट्स द क्लेवरनेस ऑफ द डिजाइनर ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू मेक श्योर कि वो फिर भी उसको एक रिलायबल मेजरमेंट्स मिल जाए ना। इवन इफ सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो प्रेशर वाकई कम हो, ठीक है। वेपर का प्रेशर वैसे भी कम होता है ना। दीज आर अदर मेथड्स ऑफ प्रेशर मेजरमेंट्स, ठीक है। अब अब इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि हम यहाँ पे क्या मेजर कर रहे हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। समझ आ गई? तो व्हेन वी स्पीक ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्रेशर? अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल क्या होगा प्रेशर का, बताएं। किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी सिचुएशन में प्रेशर की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है? 1 atmospheric pressure। स्मॉलेस्ट मैं बता रहा हूं, किसी भी प्रेशर की, चाहे वो गैस का हो। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो स्मॉल नहीं है ना, वो तो लार्ज है। मतलब यहाँ पे हमने इसकी बात की थी ना कि पी वेपर कम होगा ना, तो ये कितना कम हो सकता है? 0 सर। 0। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है, ठीक है, कि ये रियली एक्चुअल 0 है। ये क्या है? ये वो वाला 0 नहीं है जो आप पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लेते हैं अर्थ सरफेस पे या सी लेवल पे, क्योंकि वो एक्चुअल 0 नहीं है। वो उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेफरेंस 0, ठीक है। ये एक्चुअल 0 है, एब्सोल्यूट 0 इसको कहते हैं, एब्सोल्यूट 0 प्रेशर। सो इसका मतलब यह है कि एटमॉस्फेयर भी निकाल दिया, गैस भी निकाल दिया, सारी चीजें निकाल दी, इट्स वैक्यूम बेसिकली। So here we in this setup we measure pressure, but the setup suggests that even if you have this gas at pressure P और आपने यहाँ पे ये सेटअप किया, let's say this distorts some
या लिक्विड हेयर, बेसिकली ये लिक्विड जिस कंटेनर में है उस कंटेनर को ये डिस्टॉर्ट डिफॉर्म करता है, ये बॉर्डर, इसको कहते हैं बॉर्डर ट्यूब, एंड दैट बॉर्डर ट्यूब चेंजेस इट शेप, और उसकी वजह से ये जो नीडल है या ये पॉइंटर है दिस स्टार्ट्स मूविंग, और वो जहाँ पे रुक जाता है वहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाता है और वहाँ पे हम रीडिंग ले लेते हैं और इस कैलिब्रेशन हम ये कर लेते हैं। ठीक है, ये लिंकेज मैकेनिज्म है। इसको देख के आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको एब्सोल्यूट प्रेशर देगा, आप गेस करें। नो सर। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस सेटअप को देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों तरफ से आ रहा है, सो दिस विल ओनली गिव यू प्रेशर अबाउट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से जो, चूंकि ये अब होगा ये गैस चूंकि एटमॉस्फेयर से हाई प्रेशर पे होगा, ठीक है, अगर हाई प्रेशर पे होगा तो ये पॉइंटर यू मूव करेगा, ठीक है। अगर ये एटमॉस्फेयर से कम पे होगा सो देन यू मस्ट डिजाइन इट इन सच अ वे कि ये इसका जीरो कहीं ये इधर आ जाए, और ये रेफरेंस जीरो की बात मैं कर रहा हूँ। जीरो का मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस का प्रेशर क्या है, दोनों जीरो का फिर क्या मतलब होगा कि गैस प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल है। So if the gas is pressure is smaller than the atmospheric pressure, so then the pointer should move this way, otherwise it should move this way. लेकिन यहाँ पे लग ये रहा है सेटअप से कि इसका रेफरेंस जीरो इधर होगा, इसका मतलब ये है कि this can only measure pressures above the atmospheric pressure, ठीक है। इस प्रेशर को फिर क्या कहेंगे, ये फिर एब्सोल्यूट नहीं होगा, उसको हम फिर क्या कहेंगे, क्या, रिलेटिव प्रेशर, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल आपको पता है, वो वही जो आप mgh लिखते हैं ना BME में, तो ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है अगर आप ये टर्मिनोलॉजी यूज करें, इट्स नॉट द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द रिलेटिव, क्योंकि आप वो जो अर्थ पे वैल्यू है वो आपको पता नहीं है, यू आर मेकिंग द कैलकुलेशन अबव दैट, ठीक है। क्लियर होगी बात। Another name for this relative pressure is gauge pressure. आपने नाम सुना होगा ये? Have you heard this name, gauge pressure? Yes sir. आप जब जाते हैं और वो टायर में आप हवा डलवाते हैं तो वो जो मेजरमेंट देता है आपके ख्याल में वो कौन सा प्रेशर है, वो इसी तरह का सेटअप यूज करता है ना। तो वो जो आपको रीडिंग आती है वो एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं होता, वो कौन सा होगा, वो गेज प्रेशर होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा ही आपको वो करेगा। दिस इज अनदर सेटअप वेयर यू यूज इलेक्ट्रिकल इंटरफेस with the some fluid or whatever system you are measuring for pressure. यहाँ पे एक इफेक्ट है, आपने नाम सुना होगा, have you heard this name, piezoelectric effect? Have you heard this name before? No sir. piezoelectric effect एक है, आप हो सकता है सेंसर्स में या इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर्स अगर आपने पढ़ लिया तो उसमें जो प्रेशर वेरिएशंस है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा जब आप ये कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्रेशर वेरिएशंस होंगी, तो प्रेशर वेरिएशन का कुछ डिवाइसेस पे, कुछ मटेरियल्स पे ये असर होता है कि वहां पे ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको कहते हैं, जो कि गलत है लेकिन लोग उसको कहते हैं। सो दैट वोल्टेज इज देन एक्चुअली सेंस्ड बाय, इट इज प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर एंड यू सी द रीडिंग, ठीक है। ये ज्यादा हाई सेंसिटिव मेजरमेंट्स होती है पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो जो डॉक्टर के पास होता है आपके ख्याल में वो कौन सा है, वो ये नहीं होता, अच्छा वो इट इज समथिंग लाइक दिस। So here on this slide we will not only discuss the pressure units but we also need to distinguish between the absolute pressure. So this is the absolute pressure, okay. Let's say आप इस जगह पे आपके पास ये लिक्विड का ये हाइट है, ठीक है ना, बल्कि ये हाइट नहीं है, सॉरी, दिस इज जस्ट the numerical representation
ये लिक्विड नहीं है, यहाँ पे जीरो प्रेशर है, एंड लेट्स से इमेजिन यू आर प्लॉटिंग प्रेशर, एंड लेट्स से प्रेशर की कोई हाई वैल्यू है, बिकॉज यू आर मेजरिंग फ्रॉम द एब्सोल्यूट जीरो, सो यू विल कॉल दिस एब्सोल्यूट प्रेशर. ठीक है, and now let's say that starting from the absolute zero you have the atmospheric pressure at this value and you measure the gauge pressure. Gauge pressure is measured above the atmospheric pressure. तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, gauge pressure. G is the subscript, PG, gauge pressure. ठीक है. Now in some cases your pressure will be lower than the atmospheric pressure. Let's say so if it is lower, तो actual value को हम क्या कहेंगे, absolute pressure, because absolute pressure can be above, can have a value above the atmospheric pressure or below, because you are measuring from zero. So it can have a value smaller than the atmospheric pressure. Now in that case, if you only measure the difference from the atmospheric pressure in such a way that you get a positive value, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ measure करते हैं, यहाँ से नहीं करते ताकि negative ना हो, तो उसको फिर आप कहेंगे P vacuum. P vacuum. तो ये दोनों quantities positive होंगी. ठीक है. For example, अगर PG 30 है और P vacuum 10 है, तो इसका क्या मतलब है कि this pressure is 30 plus P atmospheric pressure with proper units, and this pressure is P atmospheric minus 10 with proper units. ठीक है, और इसका अपना यूनिट्स होगा, ये आप यूनिट्स यहां लगाएंगे. फिर वैक्यूम प्रेशर इसको कहते हैं. ठीक है, वैक्यूम प्रेशर का एग्जांपल आप मुझे, अच्छा तो यहाँ पे इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद वैक्यूम, क्योंकि नॉर्मली हम वैक्यूम से क्या मतलब लेते हैं साइंस में, कि वो एक्चुअली वैक्यूम है, देयर इज नो एयर. ठीक है, तो यहाँ पे वैक्यूम का मतलब यह है कि एनी फ्लूइड व्हिच हैज अ प्रेशर लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर विल आल्सो बी कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर. Now these are the pressure units which you will see. ये आपने देखा है, Pascal, 1 Pascal is 1 Newton per square meter. Now if you take 100 kilopascals, which means 10 to the power 5 pascals, okay, क्योंकि K 3 powers देगा, ये 2 powers है. And if you take 1.01325 bars, and bar you know is this much, so that will give you 1 atmosphere. 1 atmosphere is not the pressure of the atmospheric pressure, but it is suitable for that. Yeah, atmospheric pressure is actually it is 1 atmosphere, I remember, at sea level. Yeah, sea level पे यही value है शायद, if I remember correctly, but बाकी जगहों पे जरूरी नहीं कि 1 atmosphere हो. And if you convert this to other units, in English units you will have pound force per square inch, और ये जो टायर की हवा आपको बताता है वो इस यूनिट में बताता है. ठीक है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं होता, गेज होता है. तो इसका मतलब है कि वहां पे आपके पास 30 आ जाता है इस यूनिट के साथ, तो एक्चुअल प्रेशर कितना होगा, 30 प्लस 14.7 एंड दैट इज 44. तो अगर आप वहां पे 30 देख रहे हैं तो एक्चुअल वैल्यू 44.7 होगी. दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर. Now sometimes you also represent pressure by the millimeters of mercury. Remember, millimeters of mercury का मतलब ये नहीं है कि ये height है. This is still pressure, but this is the name of the unit. So इसका मतलब ये है कि, for example, how will you convert this? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि how will you convert this unit, 760 millimeters of mercury, how will I convert this to, let's say, pascals? मैं क्या करूंगा? I'll start with 760, then I'll convert, I'll think of it as the height of mercury, so I will know the height, yeah, and I will deal with millimeters and meters. I know how to deal with that. Then I multiply with the density of mercury, yeah, I multiply that with area and then with gravity, and that will give me the actual pressure. So ये सारी कैलकुलेशन जो है ना, बल्कि नहीं, हाइट तो ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है ना, ये हाइट नहीं है, सॉरी, 760 millimeter is the height.
ठीक है, हाइट दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। और इसमें सॉरी एरिया भी नहीं होगा, ठीक है। एरिया क्यों नहीं होगा, याद है आपको? एरिया भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि आपको याद है कि वो प्रेशर मेजरमेंट में एरिया कैंसिल हो जाता है ना, हमने दोनों में देख लिया। एरिया की जरूरत तब पड़ती है जब आप वेट कैलकुलेट करते हैं। ये प्रेशर है तो प्रेशर में एरिया कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में। इज दिस क्लियर ना? सर जो टायर प्रेशर होता है वो पीएसआई में नहीं होता? नहीं, पीएसआई में होता है, लेकिन यहाँ पे एंड दैट इज द थिंग व्हिच आई नीड टू डिस्कस नाउ। ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्योंकि अगर मैं आपको देखो ना, ये इसको हम क्या कहते हैं, इस चीज को शॉर्ट नाम इसका क्या होगा, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच या पीएसआई। अब मेरे पास मैंने ये प्रेशर मेजर किया, इसका भी यूनिट पीएसआई होगा, इसका भी पीएसआई होगा, और इस वैक्यूम का भी पीएसआई होगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि सिर्फ वैल्यू देख के मुझे कैसे पता चलेगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर है या गेज प्रेशर है या वैक्यूम प्रेशर है? नहीं पता चलेगा ना। जी सर। जिस तरह वोल्ट का पता नहीं चलेगा कि कौन सा वोल्टेज है, एब्सोल्यूट वाला है या रिलेटिव वाला है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप मैथमेटिकल सिंबल चेंज करो ना। आप लिख दो कि लेट्स से मैं लिख दूं 30 psi, ठीक है, और यहां मैं लिख दूं क्या, प्रेशर गेज। तो फिर तो ठीक हो गया ना, मैं लेफ्ट साइड पे देखूंगा, मैं सिर्फ वैल्यू को नहीं देखूंगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, दे चेंज psi and they write A, especially in America, this is very popular. PSIA, A will remind you कि absolute pressure है ये, तो फिर आपको ये ना भी पता हो इस साइड, और जब वो गेज होगा तो आप लिखेंगे PSIG, ठीक है। अब G में आपके पास दोनों कवर हो जाएंगे, गेज प्रेशर भी और वैक्यूम भी। कैसे, आप सजेस्ट करें? We don't have something like PSIV, so how can PSIG deal with both the gauge pressure and vacuum pressure? Any idea from your side? Here we require all the values to be positive, ठीक है? Here we can have positive values for gauge pressure and negative values for vacuum. तो अब अगर मेरे पास प्रेशर आ गया लेट्स से -10 psig, तो इसका क्या मतलब होगा कि वैक्यूम प्रेशर है? नहीं, वैक्यूम प्रेशर आपका कितना होगा फिर? 10 +10 या +10 psi, क्योंकि we are using the same symbol. Okay, now remember this thing that we had to change the unit. Okay, we had to change this the unit symbol, although numerically it's the same as psi, but we had to change it so that we can distinguish between gauge pressure and absolute pressure. This is something you need to remember. Okay, इसका कोई एनालॉजी दे सकता है? कैन यू थिंक about another quantity, another property or quantity where you have to change the units just for the same reason? Think about it. I'm sure you must have dealt with it. नहीं याद आ रहा? You will see it in today's lecture. Okay, that topic is coming next, but you will only understand that discussion if you can make sense of this. Okay, तो अभी अगर आपसे पूछ लूं कि ये दो चेंजेस हमने क्यों किए, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड का पता नहीं है। अगर मुझे ये पता है कि PG इक्वल्स और ये PG मैंने डिफाइन किया हुआ है, देन आई डोंट नीड दीज टू थिंग्स। बट नॉर्मली आप जहाँ पे लिखते हैं वहां पे चूंकि मैथमेटिक्स आप नहीं लिखते, आप सिर्फ वैल्यूज लिखते हैं, सो दिस हेल्प्स। और वैसे एक रूल ये है कि अगर आप ये ना लिखें A और आप सिर्फ PSI लिखें, तो द डिफॉल्ट शुड ऑलवेज बी एब्सोल्यूट। ओके, okay, now temperature. What do we mean by temperature? Can someone try to define it before we start this serious discussion?
So if I ask you, what do you mean by temperature? बताएं. Sir, it's a relative measurement. Of? Sir, of how hot or cold a substance is. Okay. Yeah, this is actually not a precise, this is not a quantitative or precise way. That's how I also started this slide, okay? So when we say temperature, this is actually a formal way, but how formal, we have to discuss that. We have an informal, two terms, informal, hotness and coldness of an object. A hotness, coldness ko hum basically, we want to replace this with more serious language, and that is the language of temperature. But how? How is temperature related to hotness and coldness? तो इसके लिए you imagine an experiment. आपको पता होगा ना, thought experiment बहुत useful होते हैं. You have enough knowledge to think about this experiment without performing it. ठीक है? Perform ना भी करे, so you can imagine this. So let's say you have two objects, ठीक है? Which by your definition, even though that definition is qualitative, but you know which object is warmer and which object is colder. ठीक है? अभी अगर मैं आपको दो objects दे दूं ना, तो आप फौरन बता देंगे without even knowing temperature, without even knowing the unit of temperature. कोई mathematical definition नहीं है, कोई भी इंसान ये बता सकता है कि warmer कौन सा है और colder कौन सा है. ठीक हो गया? So just imagine two objects, one of them is warmer, the other is colder. Let's say you bring those into contact. ठीक है? So मैं अगर picture बता दूं, मेरे पास एक object है जो कि hot है और एक object है जो कि cold है. ठीक है? And I bring them into contact, and then you mentally somehow imagine that they have been isolated from the rest of the world, from surroundings, so that there is no interaction with the surroundings, because we want to understand the interaction between these two. So you think of two systems, one cold, one hot, and you just try to understand how they will interact. So based on experience in the real world, जितने लोगों ने भी ये चीज ट्राई की है, आप भी ट्राई करेंगे, you will see that they will interact, and that interaction is what we mean by thermal interaction. So thermal interaction by definition is the interaction which is only because of the difference. What difference? We don't know the difference of which quantity, but we do know that one is warmer than the other. तो warmer than the other की वजह से interaction हो रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? यहां तक बात समझ आ गई आपको? Yes, sir. So we have not defined anything, but we are thinking about a scenario and we know what we are doing. We have introduced a new term, which is thermal interaction, and we speak of thermal interaction for that interaction when we observe something between a hot object and a cold object, isolated from the rest of the world. So what you will observe, you can imagine this. Will you observe an increased volume of the colder object? Yes, And sir. at the same time, a decreased volume of the warmer object. This is what happens all the time. ठीक है? Now this is, whether you explain it, whether you can explain it or not, but this is what everyone will observe. Hotter objects, they get to shrink down because of the contact with colder objects, and the opposite happens with colder objects. If because you are electrical engineers, you can also imagine this: increased electrical resistance of the colder object, and at the same time decreased electrical. Do you expect this to be the case, or you disagree? इसका कोई एग्जांपल दे सकता है? इसका दो का तो नहीं है, तो एक का आपको पता है ना? सर रेजिस्टर हीट अप जब होता है तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज बिल्कुल बिल्कुल, वहां से आइडिया मिलता है बेसिकली. And if you list this, there will be many other properties, okay? And instead of imagining all those properties, one thing is clear, that these changes, so actually you will observe changes in properties, changes in properties of the hot object, and similar changes in the properties of the cold object, and you will see this difference, that one will go up, the other will come
will come down, and eventually what will happen, and this is also based on experience, all such macroscopic changes, remember we're not talking about microscopic changes. क्यों? क्योंकि those changes never cease. Microscopically things always change or randomly change. हमारा चूंकि मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट है इस कोर्स में, सो मैक्रोस्कोपिकली वी विल ऑब्जर्व, क्योंकि ये जो दो हमने बताई है ये दोनों मैक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक नहीं है, ऑब्जर्वेबल है ये मैक्रोस्कोपिकली. So all such changes will cease, and at that point we say that there will be no further interaction, and that is when we say that the objects are in thermal equilibrium. आपको याद है लास्ट टाइम हमने इक्विलिब्रियम की बात की थी, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात की थी कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, एंड नाउ वी आर स्पीकिंग ऑफ thermal equilibrium. So if I now ask you how will you define thermal equilibrium? It is the state of two systems in contact, yeah, when there is no thermal interaction. So thermal equilibrium is the absence of thermal what? If two objects interaction, okay, if two objects are in thermal equilibrium, there is no thermal interaction. That is what we mean. So we basically in this slide we indirectly define two new terms, thermal interaction and thermal equilibrium. Now we need to connect these concepts with temperature because we are still far from what we mean by temperature. So based on these observations, scientists found that instead of talking about all these different properties, there must be a single property which can be postulated to exist, and that property should be enough to determine whether two objects will thermally interact or not. So in other words, temperature should be a quantity, and it should be such a quantity that by looking at the two temperatures of these objects, it should be very easy to tell whether they are in equilibrium, thermal equilibrium, or they will interact. ये sentence समझ आ गया कि this is an indirect way of defining temperature. This is not a direct way of defining temperature. I'll tell you what I mean by indirect definitions. ये आपको याद है मैंने BME में इस तरह की बात की थी, indirectly defining something, या नहीं? Can you recall some example from that course where I defined something indirectly? मुझे याद नहीं आ रही मैंने डिस्कस किया था या नहीं. बताएं. There are ways, okay, so maybe I'll recall you, but this is an indirect way. So now what you can say that this is now further observations. When two objects are in thermal equilibrium with a third object, yeah. So let's say there is object A, there is object B, and there is object C, and we found out that it is in thermal equilibrium with C, and B is also in thermal equilibrium with C. So we can safely say that they are also in thermal equilibrium with each other. That means that they are in thermal equilibrium with one another. This statement indirectly or tacitly defines temperature, and this is called the zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics has this statement, and it is an indirect way of defining temperature. In most cases the third object is a thermometer. ठीक है ना, हम ये जरूरी नहीं कि एक साथ करें. This could be a thermometer, और हम इस thermometer से इन दोनों को, so whenever you measure temperature with a thermometer, you indirectly assume that the thermometer and the object you are measuring, they come to a thermal equilibrium, and that is when you read, yeah, you make the reading only after that. इसीलिए वो टेम्परेचर में टाइम लगता है, वो इमीडिएटली आपको टेम्परेचर नहीं देगा, थर्मल इक्विलिब्रियम आने के बाद ही आप रीड कर लेते हैं. ये बात समझ आ गई आपको? Yes, sir. So historically thermometers have been used to measure temperatures.
ये आपको जितने भी थर्मोमीटर्स नजर आ रहे हैं इसमें एक चीज कॉमन है कि वी नीड सम प्रॉपर्टी विच चेंजेस विद टेम्परेचर, एंड यू नो दैट इट कैन बी वॉल्यूम, आपको पता है वॉल्यूम चेंज हो जाता है, प्रेशर चेंज हो जाता है, रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है. दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड. एंड ऑफ कोर्स यू आल्सो नीड अ सब्सटेंस, तो इसको हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस लाइक मरकरी, वाटर, गैस, थिंग्स लाइक दैट. सो ये उस टाइप का एक वो है, आपको पता है, ये आपने यूज किया भी होगा, ठीक है, कि ये थर्मोमेट्रिक लिक्विड है और ये इसका वॉल्यूम चेंज होता है, एरिया चूंकि कांस्टेंट है, यू कैन यूज लेंथ to infer the temperature. Similarly, there are thermocouples, yeah, and thermistors, and they use some other properties of solids to and resistance, of course. So yeah, it is one such electrical resistance thermometer. And there are also radiation thermometers of this type which do not require any physical contact. They are also called optical pyrometers, and they use radiations, and those radiations are actually rebounded by the object, और वहां से फिर आप उसको जो रेडिएशन में चेंज है उसको आप यूज कर लेते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स, लेकिन इन सब में एक प्रॉब्लम है, वो अगली स्टेप पे मैं बता देता हूँ. इन सब में प्रॉब्लम ये है, these are called empirical scales. क्या empirical scales? क्योंकि because you are using some substance, that substance, no matter which substance you use, the behavior of that substance will be limited to some range of temperatures. So you will need different thermometers for different ranges. आपको एक थर्मोमीटर नहीं मिल सकता जो सारे possible temperature values को करे, cover करे. For that reason, scientists have come up with a theoretical temperature scale, and that theoretical scale should be able to assign all possible values without depending on any substance. That scale is called thermodynamic scale. ठीक है? Thermodynamic scales, how did they come up with such a scale? You will understand that after studying the second law of thermodynamics. But for now, you just understand that we have two such scales. One is the Kelvin scale and one is the Rankine scale. Kelvin scale में unit ये होता है Kelvin, हम लिखते हैं K. Rankine scale में हम लिखते हैं R. कुछ लोग इस R के साथ डिग्री भी लिखते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि both of these are examples of absolute scales. और absolute scale में डिग्री लिखने का कोई तुक नहीं बनते मेरे ख्याल से. So क्योंकि lowest possible value is 0. That is what we mean by absolute temperature, absolute pressure. So because they are both absolute, they both start with zeros, this is how you can relate them. This is a relationship between units. 100 Kelvin will be equal to 180 Rankine. This is what you need to remember, and you can simplify this to 5K equals 9R. Remember, this is a relation not between quantities but between units. Okay. Now, if you want, let's say you have temperature T, absolute temperature T. आपको नहीं पता ये temperature आप इसकी value लिखेंगे तो वो value K भी हो सकती है और वो value क्या हो सकती है, R भी हो सकती है. क्योंकि K and R different है तो ये numerical values भी different होगी. अब मैं एक काम करता हूं, let's say मैं इसको K पे डिवाइड कर देता हूं, टेम्परेचर को. टेम्परेचर को क्या किस पे डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा यहां पे, ये वैल्यू मिल जाएगी या नहीं? yes. और अगर मैं उसी टेम्परेचर को R पे डिवाइड करूं तो मुझे कौन सी वैल्यू मिल जाएगी? Will these two values be equal? बताएं मुझे. Yes or no? No, sir. How to make this how ये इक्वेशन को मैं क्या करूं कि ये इक्वल हो जाए? उसका आसान तरीका है. मुझे पता है कि T और T तो इक्वल है ना, लेकिन K और R इक्वल नहीं है. K और R? Sir, 5K और 9R. Yeah, so I will replace K with 5. डिवीजन के बाद ये 5 मैं इधर लगाऊंगा, 9 इधर लगाऊंगा. Now these are equal. अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं ये K इधर अलग से लिख देता हूं, T डिवाइडेड बाय K, और यहां मैं क्या कर देता हूं. So it means that the values are related in such a way that the numerical value, the number of kelvins divided by 5, the number of kelvins, remember T by K is a pure number, it is not, does not have any unit, क्योंकि यूनिट आपने कैंसिल कर दिया. The number of kelvins divided by 5 is equal to the number of Rankines divided by n.
अब देखो ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें 5k के साथ लिखा हुआ है और इसमें यहाँ पे ये डिवीजन में आ रहा है डिनोमिनेटर में, ठीक है। नाउ यू मस्ट हैव सीन दी स्केल्स। अब इस स्केल में आप एक चीज नोट करें, आपने ये डायग्राम काफी दफा देखा होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज बहुत जरूरी है कि k भी एब्सोल्यूट है और r भी एब्सोल्यूट है, दे बोथ हैव एब्सोल्यूट जीरो, लेकिन सेंटीग्रेड का जीरो यहाँ पे है, ठीक है, और फ़ारेनहाइट का जीरो इधर कहीं पे है, वो लिखा नहीं है लेकिन वो इधर कहीं पे होगा। सो लेट्स से मैं यहाँ पे जिस तरह आपको याद, जिस तरह मैंने प्रेशर गेज प्रेशर की बात की थी ना, किसकी, गेज प्रेशर की, तो यहाँ पे आई नीड टू डिफाइन अ न्यू टेम्परेचर, a temperature which is not absolute but which is relative. So I need relative temperatures. T minus some fixed temperature, let's call that T naught, and I'll call this theta. I cannot use the same symbols. Instead of writing Tg, I'll just write theta. And similarly, theta prime is T minus T naught prime. Now these two values are 273. मैंने ये जीरो के corresponding वैल्यू उठा ली इधर से, नोट कर ले बहुत केयरफुली, ठीक है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि इसका करस्पॉन्डिंग जो रैंक आयन है वो ये है, तो मैंने ये दोनों दे आर इक्वल। और चूंकि इन दोनों में फर्क इस साइड पे 32 है, तो व्हाट इफ आई सब्ट्रैक्ट 32, रिमेंबर यहाँ पे मैं 32 आर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट सब्ट्रैक्टिंग 32, क्योंकि टी नॉट फिजिकल टेम्परेचर है, फिजिकल टेम्परेचर का यूनिट होगा, यूनिट से आप सिर्फ 32 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो यू मस्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट सम एक्चुअल क्वांटिटी। सो एंड इसकी वैल्यू ये होगी, आपको यहाँ से पता चल सकता है, एंड आई एम कॉलिंग दैट T naught prime. So these are just two reference temperatures. For each reference temperature, I am defining a corresponding relative temperature. Or by looking at this diagram, you can easily see कि theta और theta prime में इसका फर्क है. So which is one thing is very clear कि अगर आप ये डिग्रीज देखेंगे ना, डिग्रीज इंडिविजुअल डिग्रीज, तो K और C में कोई फर्क नहीं है और R और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये बहुत जरूरी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। लेकिन जिस तरह हमने पिछले उसमें ना पेज पे ये डिस्कशन की थी ना, ये वाली, सो वी शुड बी एबल टू कनेक्ट T by K the number of kelvins, और ये क्या है, the number of डिग्री सेल्सियस। डू नॉट ट्राई टू डू दिस, ओके। ये क्यों गलत होगा, ये जो मैंने लिखा है अभी, क्योंकि T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और C, even though C is equal to K, we have invented this new symbol only for relative temperature, just like PSIG. तो आप T को डिग्री C पे डिवाइड करेंगे तो फिर आप इस एडिटिव के साथ क्या करेंगे, वो गलत हो जाएगा। डिग्री C को आपने सिर्फ यूज करना है किसके लिए, relative temperature के लिए। That's why I say that number of kelvins should equal to number of degree Celsius, pure numbers, and now I can add pure number, I don't need any unit. Similarly, the number of Rankines is equal to the number of Fahrenheits plus this pure number, and similarly I can also relate the number of Celsius to the number of Fahrenheit, और ये 5 और 9 का फैक्टर आ जाएगा। This is what you need to remember, ठीक है। This is what I was asking you, जब मैंने आपसे पूछा ना कि PSIG का, जब आप PSI को चेंज करते हैं PSIG में और PSIA में, तो यहाँ पे आप वो तो नहीं कर रहे, लेकिन आप you are basically replacing K with C. Even though they are numerically equal, K will always be used for absolute, C will always be used for relative, even though they are numerically equal, just like PSIG is numerically equal to PSI, but they must be used for different natures of pressures. Will you remember this? और ये मैं 1 मिनट उसको बता दूं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो अटेंडेंस का भी देख लेते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ना, मैंने नोट किया है, इस लास्ट मिनट में ना वो आ जाते हैं और साइन इन हो जाते हैं और उनका ख्याल ये है कि उनकी अटेंडेंस लग जाएगी ना। अटेंडेंस इस तरह नहीं लगती, क्योंकि वो जो यहाँ पे एड ऑन यूज कर रहे हैं क्रोम का,
और वो बता देता है कि कौन सा कितने टाइम के लिए आया है। तो जो हाफ टाइम से कम के लिए आता है वो प्रेजेंट नहीं होगा, ये बता दे जो ये ड्रामे वगैरह करते हैं ना। वन थिंग विच आई नीड टू टेल यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अक्सर बुक्स में या विकिपीडिया वगैरह पे देखा होगा, दे ट्राई टू, जिस तरह ये मैंने आपको लिखा है ना कि k इज इक्वल टू c, तो वहां पे इस तरह की चीज आपको मिलेगी, k इक्वल c प्लस 273। ये गलत है, क्यों? ये ऑब्वियसली गलत है, हालांकि हर जगह लिखा होता है, क्योंकि आप बेसिकली यू आर एडिंग ए प्योर नंबर टू वन यूनिट एंड यू आर गेटिंग अनदर यूनिट, और वो यूनिट्स आपस में न्यूमेरिकली इक्वल है, तो ये बिल्कुल गलत है। व्हाट दे मीन इज बेसिकली दिस इक्वेशन, यूनिट कोई नहीं है।